This was expected. President Trump had mentioned that he would be taking a decision, although he had left it open, and he had himself said that he might attack, might not attack. He had given a 2-week time to the Iranians, but this has come very quickly. So I presume the time factor may have been mentioned only to deflect Iran's attention. The attack itself is a very decisive attack, because the main attack is on the main nuclear site, which is Fordo, which is deep inside, and they have used, according to an informal source, an American source, 12 of these bunker-busting bombs, and they dropped 2 of these bunker-busting bombs on Natanz. Then they also used naval-fired cruise missiles on Isfahan and Natanz. So they have done, they would have caused extensive damage to the sites, although an Iranian report says that there is no sign of any radiation leak, which means that whatever damage has been caused is either buried deep inside the earth, or that the bunkers deep inside the earth have survived the attack. Whatever be the position of the nuclear sites, it would certainly have incapacitated Iran's nuclear capacity for several years to come now. Exactly how much we don't know as yet. But this also means that the war has now taken a decisive turn. The U.S. has joined the war, which means Israel's capacity to counter Iran has been considerably enhanced. And President Trump has said that in case required, they will take further action. We have had one criticism from the UN Secretary General of the invasion, and he has expressed the fear that this may lead to a wider spread of the conflict. Hamas has issued a statement condemning the attack, but so far, of course, it's very early. We have not heard anything of the other Arab countries. So we have to wait and see what their reaction is, but it's quite certain that Iran's capacity to attack either Israel or any American site has been considerably weakened by this attack, and we have to see now what Iran does. One report is that the Iranian Atomic Energy Commission has said that it intends to take America to some of the international courts for attacking a site protected by the NPT, the Nuclear Non-Proliferation Treaty. So we have to see if Iran takes the diplomatic route, then of course it will mean that there is less danger of conflagration. But if it chooses to retaliate, then it will have to face a lot more damage, because Israel, backed by the US, now fully involved, are far too strong for Iran to expect to be able to counter it militarily. On the 3 nuclear plants, also he teased Iran about, he says from last 40 years, Iran is saying that we will destroy America. Israel is saying a lot of things about the nuclear things, and also how would you look at the overall situation of Donald Trump? How's overall statement of Donald Trump? Well, that is Donald Trump for us. He is not a person who minces words. He uses undiplomatic language. In this particular case, he is gloating over the destruction of an invasion of a foreign country. But that is Donald Trump. He has the strength to execute, and he has the will to execute whatever he desires. In this particular case, he has gone ahead and used some of the most powerful non-nuclear bombs ever made by human beings. This is the most powerful bomb with 14,000 kilograms of explosive power. And having used 12 of these on Fordo would have meant a huge damage to that site. But gloating over this military action is not a good sign, because it means that the resentment will be so much more in Iran among the people. And the idea that there should be regime change, that the people of Iran should rise against the current regime in the country, those chances recede, because nationalism gets incited in the people's minds, and they rally behind the regime. So a little more restraint would be better, but then we can't expect that from Donald Trump.
statement, he says it is a break of strong escalation. International law and rule has been broken. He called up UN members to take up their role. How would you look at it? Well, yes, he has expressed concern, and he has also expressed he said he's gravely concerned about the attack, and that there is danger of conflagration of the conflict. I'm not too sure if there's any danger of conflagration, because Iran's capacity to retaliate has been considerably reduced, and it is not clear if any other country is going to intervene in favor of Iran, because, as I said, Israel and America combined are much too powerful in this region for any country to take them on. So most countries would probably feel safest to make a comment and then keep quiet about it. In any case, none of the Arab countries was comfortable with the idea of Iran going nuclear. So they would not quite mind Iran's nuclear capacity being destroyed by the Americans. Well, not attack on India, but what is quite possible is that Iran, in order to trouble its Arab neighbors for not standing up for it, may decide to close the Hormuz Strait. And that is possible by simply bombing one or two oil ships, oil tankers coming out of the Hormuz Straits. The Hormuz Straits are very narrow, and just slight bit of military action can ensure that the straits close. Now, that will mean about a third of the global oil supplies pass through the Hormuz Straits. For India also, a very large percentage of its oil comes from that region. So there will be a definite spike in oil prices, and we will be affected by oil shortage. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अमेरिका ने हमला करा और उन्होंने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं, इसका भविष्य पर कितना असर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी? ये अपेक्षित था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय दिया था ईरान को अपने शांति वार्ता शुरू करने के लिए और अपने उनका जो परमाणु कार्यक्रम है उसे बंद करने के लिए, लेकिन 2 सप्ताह के पहले ही उन्होंने ये कार्रवाई कर दी है। जो कार्रवाई की है वो बहुत ही विध्वंसक है। उन्होंने 14,000 टन के जो बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं वो इस्तेमाल किए हैं फोर्दो में और 2 इस्तेमाल किए नटांस में। ये अनौपचारिक रूप से किसी अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है। और उसके अलावा उन्होंने क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, शिप फायर अमेरिकन नेवी से जो इस इलाके में है। तो बहुत नुकसान हुआ होगा ईरान के कार्यक्रम को। ये निश्चित है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अब कुछ वर्षों के लिए तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और ईरान की जो क्षमता है इजराइल पर हमला करने की वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि इधर लग रहा था कि उनके कुछ मिसाइल इजराइल का जो आयरन डोम है उसे भेद कर इजराइल पर हमला कर रहे थे। तो ये लग रहा था कि इजराइल की जो सुरक्षात्मक शक्ति है वो कमजोर पड़ रही है। तो इस हस्तक्षेप से अमेरिका ने एक ओर तो इजराइल को आश्वस्त कर दिया है कि अमेरिका पूरी तरह उसके साथ है, और दूसरी ओर इस क्षेत्र को भी सूचना दे दी है कि वो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे बिल्कुल ही नष्ट करना चाहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट होने से जो अरब देश हैं इस इलाके के, उन्हें खुशी ही होगी। बोलेंगे नहीं, वो इजराइल की निंदा करेंगे, अमेरिका की निंदा करेंगे, लेकिन उनमें से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भी डर था कि ईरान यदि परमाणु बम बनाता है तो उसका इस्तेमाल वो उनके खिलाफ भी कर सकता है। अपनी जवानों को न सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट किया है बल्कि इस पूरे मिशन की जानकारी के साथ ही ईरान को चेतावनी दिया, कहा कि पिछले 40 सालों के साथ जिस तरह धमकी देती है उसका असर है। ईरान अगर शांति की तरफ नहीं जाएगा तो उसे इस तरह के अंजाम भुगतने होंगे। हाँ, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इजराइल तो आतंकित था ही, अरब देश भी घबराए हुए थे। और अमेरिका की तो पुरानी दुश्मनी है ईरान के साथ, क्योंकि आपको याद होगा जब ये क्रांति आई थी, जब ये सत्ता में आए थे ये लोग सुप्रीम लीडर और इस्लामिक पार्टी,
तो उस समय अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ था और बंधक बनाए गए थे, बहुत एक साल से ऊपर करीब वो थे। तो अमेरिका की पुरानी दुश्मनी ईरान के साथ है और अमेरिका भी इस बात में इजराइल के साथ एक मत था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे नष्ट करना होगा, और वही उसने किया है। हाँ, इतना इस प्रकार उस पर जश्न मनाना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे ईरान के अंदर जो जनता है वहाँ की, वो सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है और राष्ट्रीयता वहाँ पर और बढ़ती है। तो जो वर्तमान जो वहाँ पर सत्तारूढ़ जो दल है वो और मजबूत हो जाता है। तो यदि अमेरिका का उद्देश्य है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, तो इस प्रकार का जश्न मनाना उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। एंटोनियो गटर्स ने भी चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन होना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से भी इस बारे पर अपनी कॉल लेने की बात कही है। हाँ, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उस पर आधारित जो विचार होना चाहिए उन्होंने दिया है कि ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, और उन्होंने इस पर चिंता प्रकट की है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि इससे ये युद्ध जो है वो इस क्षेत्र में और फैले। मैं उससे उतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि ईरान के साथ खड़ा होने के लिए इस वक्त कोई देश तैयार नहीं होगा। जो अरब देश हैं वो नहीं आग सामने आएंगे, और उसके अलावा और कोई देश है नहीं। पश्चिमी देश तो सभी असंतुष्ट थे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, और ईरान की अपनी क्षमता जो है वो बहुत कमजोर हो गई है अब, और अमेरिका के आने के बाद से तो और भी खतरनाक होगा ईरान के लिए इजराइल पर किसी रूप से हमला करने से। क्या कहेंगे, क्या उसका भी असर पड़ेगा और भारत के लोगों पे नहीं होगा ये? हॉर्मुज का जो स्ट्रेट्स है, जो नैरो, जो पतला सा समुद्री इलाका है, जो कि जो खाड़ी है, जैसे पर्शियन खाड़ी या अरब खाड़ी बोलते हैं, उसमें और अरब सागर में जो रास्ता है वो बहुत पतला रास्ता है, जो ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ ओमान है, और वहां पे यदि एक तो जहाज भी डूब जाएं तो वो रास्ता बंद हो जाता है, और उस रास्ते से ही विश्व का लगभग 1/3 तेल निकलता है, पूरे विश्व के देशों में जाता है, और भारत के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का उसी रास्ते से होकर भारत आता है। तो हो सकता है कि ईरान अपने पड़ोसी अरब देशों को परेशानी पहुंचाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दे, और जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उसके लिए। और यदि ऐसा करता है तो भारत पर और विश्व के अन्य देशों पर जो खाड़ी के तेल पर निर्भर हैं, उन पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।